Namaste, myself Sachchida, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering with the Institute of Technology. So today we are going to discuss in the continuation of the last lecture the tensile test methodology and how this tensile test is to be measured. So before proceeding for that particular thing, we need to sum up last lecture that what is the tensile test and how it is related to the material's property. So basically the tensile test is related to the ductility of the particular material which is utilizing for examine the tensile strength of that particular material or the ductility of the material, that when the two ends of the particular material is to be stretched by the force in the opposite directions, what will happen to that particular material and how long that particular material is to be deformed or elongate, and that how much resistance of that particular elongation is to be managed by that particular material. So these things need to be taken care in this particular scenario, and that is how we discussed by the various introduction move, and then we talked about that particular specimen and as per the standard by which these particular materials are to be chosen, and how this particular test is to be taken care, and what are the various important roles which will need to be considered, that how the material is being stressed or to sustain the stress is to be handled by these particular things, and how the particular gripping method is to be taken care in the particular the universal testing machine, and that is how these things is to be done perfectly. And these are the various another kind of types of machines which are used for the particular testing, for the universal testing, for the tensile testing. These are the two material machines, the electromechanical machines, and that particular hydraulic machine is utilizing for this particular things. And as all about the above, there is particular stress strain curve play a very vital role to understand the behavior of the material during the elongation, during the tensile test, that how it behaves and how the curve is to be represented by showing the various stress and strain on the particular material, and how and when it is to be breakdown. So this is the schematic diagram of that particular material, which is showing the exact point, that is the initial point from the zero to elastic limit, and then the last limit of proportionality, that is the particular things, and the plastic region and the upper yield, that is the yielding process, and the lower yielding, and the you can say the ultimate tensile fracture strength, and so on. So this is the particular slide was shown to understand the particular ductility and elasticity, or you can say the elastic and the plastic deformation of the material. So how it is showing. And this the similar case, the yielding is how the point, that is how that particular graph is rising up and then down, then it reaches to that particular ultimate tensile strength. So now we are reached to our concern, that the particular tensile test, how it is important to consider the involvement of that particular tensile testing, and these include the sample selection, sample preparation, test setup, test procedure, data recording, analyzing, and the reporting. So these all things is to be taken care when we examine the test specimen for the tensile test or to examine the ductility. So obviously sample selection is very important when a material is to be tested. So the objective usually is to determine whether or not the material is suitable for intended use. So first of the things is to be measure is the very most important thing to identify the material as which is suitable according to that particular situation or not. So the sample to be tested must fairly represent the body of the material in the question. So that the particular point, that the particular location of the particular material is to be examined, and that is how these things to be need to be taken care. And in the other words, it must be from the same source, and have undergone the same processing step, as we discussed in earlier class, that the material specification and that specification including
the processing of that particular material, that by which type of processes is gone through, and what are the various sources to create that particular material. We discussed about earlier that the first some material are made by the casting, some material are made by the forging process, some are made by the powder metallurgy, and so on. So all other processing methods having their distinct importance, and due to that structural changes in the material is to be take place, and that is how when the structure of that particular material is to be changed, the obviously the property will also the change. So it is often difficult to match exactly the test sample to the structure made from the material. So sometimes this kind of difficulty arises to match the particular test sample according to the structure which is made by that particular things. So a common practice for testing of large casting, forging and the composite layers is to add extra material to the part for use and build in test sample. So what we are doing, अगर किसी भी मटेरियल का टेस्ट करना है तो उस मटेरियल से कुछ ज़्यादा ही बनाते हैं। ज़्यादा इसलिए बनाते हैं कि भाई अगर उस मटेरियल को हमने टेस्ट मतलब मटेरियल को हमने बना दिया और बनाने के बाद उसी में से एग्जैक्टली उस डायमेंशन में से ही हमने पीस को काट लिया, तो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उतना सैंपल हमने रेडी किया था वो तो बेकार हो गया, तो वो सारा तो स्क्रैप में चला जाएगा। तो इसी के हिसाब से हम बिल्ड इन जो है टेस्ट सैंपल में क्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा पोर्शन क्रिएट किया जाता है पर्टिकुलर मटेरियल्स के अंदर, जहां से टेस्ट स्पेसिमेन को काटा जा सके और जिससे उस टेस्टिंग को एग्जामिन किया जा सके बिना मटेरियल का जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मटेरियल है उसको हैम्पर किए हुए। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, ये एक कॉमन प्रैक्टिस में आती है कि किसी भी लार्ज स्केल पे अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है या मटेरियल डिज़ाइन हो रहा है या फिर मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, तो उसके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है। क्योंकि अगर बड़ा कोई कास्टिंग है, सपोज ये एक रूम के बराबर अगर कास्टिंग हम कर रहे हैं, तो कास्टिंग को कर रहे हैं या फिर फोर्जिंग कर रहे हैं इस रूम के बराबर अगर कोई स्टील का पीस है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी कि भाई क्योंकि उनको बनाने में बहुत सारा समय और बहुत सारा मटेरियल और पैसा खर्च हुआ होता है। तो अगर इस स्पेसिफिक मटेरियल जो शेप एंड शाइट में बना हुआ है उसमें से ही अगर एग्जैक्ट पर्टिकुलर डिज़ाइन में से ही मटेरियल को काट लेंगे तो उसके शेप एंड साइज में दिक्कत आ सकती है। सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू कंसीडर दिस थिंग्स एंड दैट इज अगेन विद दैट रिलेटेड टू दैट कंपोजिट लेयर आल्सो। कंपोजिट की लेयरिंग अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर कर रहे हैं या फिर कंपोजिट मटेरियल से उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें क्या है कि एक्स्ट्रा मटेरियल को प्रोवाइड करना बेहतर रहता है। हाँ, वो इसीलिए कि जो पर्टिकुलर टेस्टिंग है उसका वो बेहतर तरीके से हो सके। So this material is cut from the complete part after processing and it made into test specimen that have been subjected to the same processing step as the bulk of the part. And in practice, these specimen may not exactly match the bulk of the part in certain important detail, such as the grain pattern is critical areas of the forging. One or more complete part may be sacrificed to obtain test sample from more specific area from the comparison with the built-in sample. Thus, it may be determined how closely the built-in sample represents the material in question. So here the scenario is little bit showing that the material which is made particular, you can say this material is to be cut from that complete part after processing and it made into test specimen that has the subject to the same processing step, जो भी उसके साथ बना हुआ बल्क पार्ट में उसी के हिसाब से बनना होता है। और इन प्रैक्टिस दिस स्पेसिमेन में नॉट एग्जैक्टली मैच। समटाइम कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है एग्जैक्टली अभी तो ये एक ऐसा है कि एक प्रोडक्ट जब बन रहा है उसी में हम बिल्डअप पेज बना दिए। दूसरा सिस्टम ये क्या है कि कभी कभी किसी मटेरियल बड़े बड़े कास्टिंग या फोर्जिंग को अगर या फिर कंपोजिट लेयर को अगर हमें चेकअप करना होता है तो उस समय हम क्या करते हैं कि
उस बड़े लेवल पे पहले ही ना बना के हम मटेरियल के मिलते जुलते टेस्ट सैंपल को रेडी किया जाता है छोटे अमाउंट पे, जिससे कि हमारा कॉस्टिंग और बाकी चीज़ें बच जाए। तो उसको बनाया जाता है एक सैंपल के तौर पे, जो कभी कभी कुछ होता है कि प्रोसेसिंग में डिफरेंस होने की वजह से ओरिजिनल सैंपल से मैच नहीं करता है। तो ये सारी दिक्कतें आती है अगर आप जब प्रोडक्शन में जाएंगे या किसी चीज़ को बनाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी। ये बहुत ही क्लोजली, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। मैं सिंपल घर के किचन से ही बहुत इजीली चीज़ों को समझाया जा सकता है कि अगर घर में कहीं पार्टी होने वाली है और अगर आप कहेंगे कि एक स्टैंडर्ड के बिहाफ पे अगर हमें दाल ही बनाए, सब्जी एक सब्जी बनानी है, तो पहले क्या करेंगे कि उस जिस तरह से सब्जी को बड़े लेवल पे बनाना है उसको छोटे लेवल पे बना के देख लेंगे, ठीक है। तो छोटे लेवल पे जब बनाएंगे तो उसको बनाने का जो प्रक्रिया होगा वो बड़े वाले प्रक्रिया से अलग होगा। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा ही आएगा उस सब्जी के टेस्ट में या उस सब्जी के बनाने के तरीके में। तो जब उसके बिहाफ में टेस्ट कर लेंगे कि हाँ ये छोटा सा थोड़ा सा बना के देख लिया, इस बिहाफ में जो भी प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं ये इसको फुलफिल कर रहा है। अब जब आप उस सब्जी को बड़े लेवल पे बनाने जाओगे तो जो भी क्वांटिटीज है अब विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर आप डालोगे ही डालोगे, लेकिन जो बनाने का प्रक्रिया होगा, जो एरिया होगा और जो प्रोसेसिंग होगी वो कहीं ना कुछ तो डिसमैच करेगी, राइट। सो वही चीज इसमें भी बताया जा रहा है कि अगर आप सैंपल बना लेते हैं तो सैंपल को बनाने का एक तरीका अलग होगा, और जब होल लॉट ऑफ प्रोसेस मटेरियल बनेगा तो उसको बनाने का थोड़ा प्रोसेस सेम होगा, लेकिन जब कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो वो एक छोटे सैंपल के मुकाबले कहीं अलग होगा ही होगा, एंड दैट द थिंग्स इज नीड टू बी टेकन केयर। So there is a special case in which the object of the test is to evaluate, not the material. So that the special case that the thing is to be taken care. But the test itself, here the test specimen must be nearly identical as possible. So the difference in the test result represents as far as possible only the variability in the testing process. So अगर हम मटेरियल्स को अलग-अलग मटेरियल्स को टेस्ट कर रहे हैं सेम तरह से, तो वो थोड़ा आइडेंटिकल होना चाहिए और चेंजेस किसमें होने चाहिए कि टेस्टिंग प्रोसेस में, कि भाई किसी के ऊपर 150 किलो जूल का लोड लगा दिया, किसी के ऊपर 200 किलो, उसी मटेरियल के ऊपर 200 किलो जूल का लगा दिया, उसी मटेरियल पे 170 किलो जूल का लोड लगा दिया, तो अलग अलग उसके वेरिएबल्स को सेट करके हम मटेरियल को टेस्टिंग करते हैं। और सिर्फ लोड ही नहीं, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनके बिहार में इसको एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। और उसके जो भी टेस्ट रिजल्ट आते हैं देन उसको कंपेयर किया जाता है। एक सिंपल पर्टिकुलर टेस्ट रिजल्ट से हम किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। सो सैंपल प्रिपरेशन क्या है, इट शुड बी रिमेंबर, इसको ध्यान देने वाली बात है। सो पहले क्या करेंगे, दैट अ सैंपल इज क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल दैट रिप्रेजेंट अ लार्जर लॉट। The sample usually is made into a multiple specimen for the testing. As obviously कोई भी अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको एक बार में एक स्पेसिमेन से ही हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हाँ यही सही है इसके लिए, तो नंबर ऑफ स्पेसिमेन को हमें रेडी करना पड़ता है। So the test sample must be prepared properly to achieve accurate result. That is to be the point to be followed. And the following rules are suggested for the journal guidelines. The first rule is, as each sample is obtained, it should be identified as to materials description, source, location, and orientation with respect to the body of the material, processing status at the time of sampling, and the data with respect to the body of material, processing status at the time of sampling, that the thing is, and the data, at the data at the time of the day that the sample was obtained. So these things is to be taken care. And the second thing, the test specimen must be made carefully with attention to several details. The specimen axis must be properly aligned with the material rolling direction, forging grain pattern or composite layout. So these things need to be taken care when we creating any kind of a sample or a material, cutting the materials from the particular lot. So cold working of the test section must be minimized. कोल्ड वर्किंग ऐसा प्रोसेस है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं दो चीजें बताना चाहूँगा। There are the two kind of a processing in the manufacturing system. एक होता है कोल्ड वर्किंग, एक होता है हॉट वर्किंग। तो हॉट वर्किंग में क्या करते हैं, आपने लोहार को देखा होगा, तो लोहार लोग क्या करते हैं
लोहे को भट्टी में गर्म करते हैं और उसको हैमरिंग करते हैं, उसके ऊपर हैमर चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द हॉट रोलिंग। कोल्ड रोलिंग में क्या है कि जो लोहा है वो एज इट इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहेगा और उसको बीट करके हैमर से प्रेस करके रोलर में डाल के उसको प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं। सो दैट इज द मेन name which is identified, that is the hot working and the cold working of the test section, that must be minimized। क्योंकि कोल्ड वर्किंग में चांसेस क्या होते हैं, क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मटेरियल के। सो वो डिपेंड करता है किस मटेरियल के ऊपर वो काम होता है। सो द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन मस्ट बी हेल्ड within the allowable tolerance stabilized by the test procedure। So we need to provide that particular tolerance regarding that particular dimension। The attachment area at each end of the specimen must be aligned with the axis of the bar, and each specimen must be identified as belonging to the original sample. If total elongation is to be measured after the specimen breaks, the gauge length must be marked on the reduced section of the bar prior to testing। So the each specimen must be identified as belonging to the original sample। Obviously जिस samples को हमें identify करना है वो उसी से belong हो। If total elongation is to be measured after the specimen break, the gauge length must be marked on the reduced section of the bar prior to the testing। तो ये जो स्टैंडर्डिंग जो हमने डिफाइन किया हुआ है गैज लेंथ को लेने का और टोटल इलॉन्गेशन को मार्क करने का, तो ये सारी चीज़ों को हमें सैंपल प्रिपरेशन के टाइम में ध्यान देना जरूरी है। तो दो चीज़ें होगी, जब आप उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जिस लॉट से उसको काट रहे हैं और जिस तरीके से, चाहे आप रोलिंग से उसको बना रहे हैं, चाहे फॉर्जिंग से बना रहे हैं या उसके ऊपर कंपोजिट की लेयर कर रहे हैं, तो उस समय मटेरियल का ध्यान देना है। और दूसरे समय जब आप प्रोसेसिंग करने से पहले उसके ऊपर मार्किंग करेंगे, मार्किंग को भी ध्यान देना है एज पर द ASTM स्टैंडर्ड, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। ये एक स्टैंडर्ड है जो हर तरह के मटेरियल्स को या हर तरह के मैकेनिकल टेस्ट को सही तरीके से करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया हुआ है और उसी स्टैंडर्ड के बिहार पे ये सारी चीज़ें होती हैं। सो व्हाट हैपन अगर आप ध्यान न दें, व्हाई वी आर डिस्कसिंग इन दिस काइंड ऑफ थिंग इन दैट पर्टिकुलर इन you can say subjective manner and is to be detailed, because each point is to be focused। If I left something, you need to read from that particular point and to understand, and then we will discuss if you have any confusion। So the test setup required that equipment be properly matched to the test at hand, and there are the left is improper and the right is the proper one। As we discussed, in tensile test, most of the specimen size are in the shape of dongle shape or the dumbbell shape। So the left one is not the proper one and the right one is the proper one। The three requirements of the testing machine: force, capacity sufficient to bring the specimen to be tested। ये बहुत जरूरी है कि आप भाई जिस पर्टिकुलर मटेरियल को चेक करने जा रहे हो उसको लोड को बियर करने की क्षमता उस पर्टिकुलर टेस्टिंग मटेरियल मशीन में है कि नहीं है। द कंट्रोल ऑफ टेस्ट स्पीड, ऐसा नहीं कि आपने लोड इतना ज़्यादा लगा दिया कि वो एक बार में ही गड़बड़ हो गया। सो और द स्ट्रेन रेट ऑफ द लोड रेट एज रिक्वायर्ड बाय द टेस्ट स्पेसिफिकेशन, and precision and accuracy sufficient to obtain and record properly the load and extensometer information generated by the test। So during the testing, it is to be responsibility, a very much responsibility to taking care of this particular point, how much gradually load the machine is applying, and that how the elongation of that particular material is taking place, and the extensometer. Extensometer is a device which identify the elongation in the material, and that is why this particular point is to be mentioned here। That is the elongation of that particular material is to be identified by this particular by the equipment, and the elongation process which is happening in the material is recorded on that particular stress strain curve which is drawn by that particular machine। So for grip of which type are common used in the tensile testing, only two rules apply: the grip must properly fit the specimen, as we discussed, for the various kind of thickness of the material, shape of the material, we define the various kind of grips,
and that is why it is very important. And they must sufficient force capacity so that they are not damaged during the testing. So these things to be precise, and that is how the ASTM standard is to be defined, and that is how it is to be worked. So So these things need to be taken care while we are grabbing that particular test specimen in that particular machine. So that is how this particular thing is need to be taken care. And in the next slide we will discuss that is how this particular gripping is to be taken care during holding that particular material in the jaw of that particular test machine. So it is very important to taking care the precision during the test. So how it is that? So you can see from the figure there are the three figure which is showing. In that three figure there are the two figure which are showing the wrong placement of the test specimen, and that is how we need to mention these things, and that's why we need to clear all these things at that particular thing. So I described earlier in the section the textile specimen. So the tensile specimen and testing machine, there are several techniques for installing the specimen in the grip. So हर एक काम के लिए एक स्टैंडर्ड मेजर्स दिए गए हैं जिनके भी हाथ पे पर्टिकुलर काम को एक्म्प्लिश किया जाता है, और इसीलिए स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है पर्टिकुलर किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं और उस टेस्टिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है कि सेफ्टी फर्स्ट है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड लग रहा है इस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर, अगर कहीं गलत हो गया और छटक के लग गया तो चोट लग सकती है। दूसरी चीज़ें, अगर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट कर दें बट वो टेस्ट रिजल्ट जो आपको चाहिए था, जिस तरीके से चाहिए था, वो सही तरीके से ना हो पाए। सो इसके लिए भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो स्टैंडर्ड दिया हुआ है एक तरह से आपको रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए, भले ही आप उसको अपने तरीके से करना चाहें, लेकिन उसके लिए आपको स्टैंडर्ड को अगर फॉलो करेंगे तो आपको एक बेटर टेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए स्टैंडर्ड को बनाया गया है, और वो स्टैंडर्ड भी इसी भी आप पे बने हैं कि तरह तरह से उस टेस्ट को परफॉर्म करके देखा गया है और उसके सारे रिजल्ट को कंपेयर करके मैच किया गया है, एंड देन जो सबसे सुटेबल और बेस्ट और इजी वे में मशीनिंग टेक्निक लगी है पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, उसको मतलब ध्यान देना बहुत उस पर कम से कम ये काम हो पाया है, तब जाके एक कोई स्टैंडर्ड सेट होता है। And these are the things to be need to be taken care of. So there are the several techniques for installing the specimen in the grip. So with the wedge grip, the placement of the specimen in the grips is critical to proper alignment, and that wedge grip and the things we need to think, that is how this creating the problems, and it is why it is so critical. So ideally the grip faces should be of same width as the tab end of test bar. सो जो ग्रिप है फेस है जो ग्रिप का, वो सेम विथ का होना चाहिए कि जिससे जो ग्रिपिंग करनी है पर्टिकुलर मटेरियल की वो उसमें सही से जाके फंस जाए। ऐसा ना हो कि वो बड़ा हो और उसको पकड़े तो जब आप लगाने जाए तो वो सही से उसको जॉ को होल्ड ही ना कर पाए। And that's why this particular test specimen standard is to be given as per the ASTM, and that's why we are following it. And according to that, the machine is also designed that this particular machine will this particular test bar will be easily examined in this particular machine. And how is that possible? It is only possible due to the standards. So the ideally the grip faces should be on the same width as the tag end of the test bar. Otherwise, the lateral alignment is dependent only on the skill of the technician. So that thing is very important. So skilled labor, skilled technician is very must required. Whether if you are not properly follow the standard rule,
So according to their experience, he particularly put that particular material into that grip, and the work is to be happen. So the wedge grip insert should be contained within the grip body or crosshead, and the specimen tab should be fully engaged by the grips. So other types of grips have perhaps fewer traps for the inexperienced technician, but an obvious one is that with threaded grip or length. So what is the length of the thread on the specimen, which is equal to at least one diameter, should be engaged in the threaded grip. So that the thing is to be taken care, and that is you can see in this figure that the gripping of that particular test specimen is a very important thing, and you can see improper left center and left and right alignment of the specimen in the wedge grip. And अगर आप देख सकते हैं कि अगर इसमें सही से प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा तो क्या टेस्ट रिजल्ट सही आएंगे? ऑब्वियसली जब चीज़ें आप इनिशियल बेस पे सही से नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग all these things always and always. So in this continuity, I am reading that particular points, and we will discuss how these things is to be maintained. So there are several potential problems, so that must be watched for during the test setup. तो टेस्ट को सेटअप करने से पहले भी बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारे रीजंस को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें स्पेसिमेन मिस अलाइनमेंट एंड वॉर्न ग्रिप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि आपने बहुत सही तरीके से दोनों को ग्रिप में टेस्ट स्पेसिमेन को फिट कर दिया है, जब आप लोड लगाने जाते हो तो क्या होता है, एक ग्रिप जो है वो छोड़ देता है उसको, तो उस समय कॉशन रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें का ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा है कि भाई अगर सही से ग्रिपिंग का टाइटिंग नहीं हो रहा है, आधे आधे ड्यूरेशन में जो आप टेस्ट कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में भी ऐसा चांसेस हो सकता है कि मटेरियल स्लिप कर जाए पर्टिकुलर जगह से और वो मिसअलाइन हो जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। The critical alignment of 2 points of the attachment of the specimen is important. So that attachment of that particular specimen regarding that particular test is to be very important, because any of center loading will exert bending load on the specimen. So that's why these things is to be taken care. So bending को रोकने के लिए या फिर उस चीज़ को बेहतर करने के लिए हमें इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज क्रिटिकल इन टेस्टिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें होती है, उसमें हम उसमें टेंसाइल टेस्ट हम नहीं करते, राइट, बेसिकली क्योंकि वो प्लास्टिसिटी को प्रोपोर्शनल लिमिट से आगे नहीं जाता एंड मे कॉज प्रॉब्लम इवन फॉर द डक्टाइल मटेरियल्स आल्सो। तो ब्रिटल मटेरियल में बेसिकली हम लोग कंप्रेसिव लोडिंग के लिए काम करते हैं, बट डक्टाइल मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो अलाइनमेंट विल बी अफेक्टेड बाय द टेस्टिंग मशीन लोड फ्रेम, any grip on feature used, and the specimen itself. So these things to be mentioned. So misalignment may also include load measurement errors due to the passage of the bending forces through the load measuring apparatus. So that misalignment is to be measured by these particular things and need to be taken care. So such error may be reduced by the use of spherical seat or U-joint in the setup. Worn grip may contribute to off-center loading. Uneven tooth mark across the width of the specimen tab are an indication of trouble of the wedge grip. So ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग एक पॉइंट में इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये छोटी छोटी लाइंस जो हैं, ये एक मार्क है, ये आई कहाँ से? ऑब्वियसली ये आएगी तभी जब हम कहीं ना कहीं गड़बड़ी की होगी। तो ये गड़बड़ी को ध्यान में रख के ये जो पॉइंट्स आए हैं, तो हम कहते हैं ना गलतियों से भी सीखते हैं, तो उन गलतियों को हम इसीलिए मेंशन कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना इसमें बहुत ज़रूरी है। सो स्प्लिट कॉलम ग्रिप्स में आल्सो कॉज ऑफ सेंटर लोडिंग। सो अनइवन wear of grips and mismatching of the split shell insert pair are potential problem areas. So strain measurement are required for many tests and they are commonly made with extensometers, but strain gauge are frequently used, especially on small specimen or the where the Poisson ratio is to be measured. So strain extensiometer play a very vital role
basically for those materials which are possessing a very less dimension. So, if strain measurement are required, appropriate strain measuring instrument must be properly installed, and the technician should pay particular attention to the setting of that particular extensometer gauge length, that is a mechanical zero, and the zero of the strain readout should repeat consistently if the mechanical zero is set properly. So these things is to be taken care before proceeding for the test. So in other words, once the extensometer has been installed and zero, the subsequent installation should require minimum readjustment of that particular zero, and then when the load is applied on that particular material by that particular test, so that can be measured by this extensometer. Now, after loading that particular specimen into that test machine, what we are doing now, we are following the particular steps to proceeding for that particular tensile test. And for that particular test procedure, we applied all those which is happening the rule, same rule which is applied in all of the tests. So load and strain range should be selected so that the test will fit the range. The maximum values to be recorded should be close to the top of the selected scale as convenient without running the risk of going past full scale. So this need to be taken care. So range may be selected using the past experience for a particular test और स्पेसिफिक डाटा फॉर मटेरियल इफ अवेलेबल। तो अगर हमने पहले भी किसी उस मटेरियल के ऊपर अगर टेस्ट किया हुआ है या कोई हमारे पास उस मटेरियल से रिलेटेड पहला डाटा अवेलेबल है तो उसके बिहाफ पे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और उसी के बिहाफ पे टेस्ट जो रेंज है उसका पर्टिकुलर का उसको हम फिक्स करेंगे। So the ranges may be selected using past experience for a particular test or specification data for the material if available. So note that the many computer-based technician testing system have automatic range selection and will capture data even the range initially selected to be small. So that is how the computer is replacing the human work, and that is how they are also providing the precision. So they have automatically fed the that earlier data in that, and according to that they select that particular things. So the identity of each specimen should be verified and pretended identification should be accurately recorded for the test record and the report. So the data is very important now. If we take that particular data properly, then we can compare the others data with each other and go for the following selection of the particular materials that is suitable for that particular work. If we did not do that thing, if we do not do particular thing in a proper manner, it will lead to the various kind of a problem. So you can imagine if we lose the testing over here, what will happen? यही होता है कि अगर कहीं सही मटेरियल्स का टेस्टिंग नहीं हुआ तो बहुत सारी जगह पे आए दिनों आपको न्यूज़ मिलने में आई कहीं कोई पुल गिर गया, कहीं कोई सड़क धंस गई या कुछ हो गया, ऐसा कोई बिल्डिंग गिर गई। तो वो होता क्यों है? क्योंकि उसमें जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं वो एज पर द स्टैंडर्ड टेस्टेड नहीं होते हैं और वो उस वर्किंग कंडीशन को भी स्टैंड नहीं कर पाते और वो वहाँ पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान को झेलना पड़ता है। And that's why this test is needed to be taken care properly and precisely. So the dimensions needed to calculate the cross-sectional area of the reduced section should be measured and recorded. So the identity of each specimen should be verified and written identification should be accurately recorded for the test record. So the dimension needed to calculate the cross-sectional area of the reduced section should be measured and recorded, and these measurements should be repeated for every specimen, and it should not be assumed that the sample preparation is perfectly consistent. So the load indicator 0 and the plot load axis is 0 if applicable should be set before the specimen is placed in the grid. So zeros should never be reset after the specimen is in place. So the specimen is put in the grid and is secured by closing the grid. Closing the grid. So if preloaded is to be removed before the test is started, it should be physically unloaded by moving the loading mechanism. So the zero adjustment should never be used for this purpose.
Note that in some cases, preload may be desirable and may be deliberately introduced. Now, for material for which the initial portion of the curve is linear, the strain zero may be corrected for the preload, and this is how these things are to be shown. And this is the proper and improper engagement of the specimen in the wedge grip that is showing here. I think it is replaced by that particular thing. So that particular thing is finally reaches that we concluding these things and this particular slide which you need to be following. So it is important that the test specification be followed for the speed of the testing, and some materials are very sensitive to the test speed, and different speed will give the result, different result. So these things need to be taken care while we performing this particular testing. So if we taking care of this kind of a speed of that particular test, the result will be better. So some material are sensitive to the test speed as we discussed, some are the other. So many testing material load and the strain measuring instrument are not capable of responding fast enough for accurate recording of the test result. If an excessive test speed is reduced, क्या है कि अगर जल्दी जल्दी मतलब लोड लगा रहे हैं तो कुछ ऐसे उसमें टेस्ट इक्विपमेंट में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो जल्दी जल्दी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत जरूरी है. सो टेक्नीशियन शुड मॉनिटर द टेस्ट क्लोजली एंड टू बी अलर्ट फॉर द प्रॉब्लम. तो अगर इन तरह से कोई चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है और अगर वो सही चीज़ों से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो टेक्नीशियन को अलर्ट रहना होता है, और थ्रू आउट द प्रोसेस जब भी प्रोसेस टेस्टिंग होती है उसको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है. So one common sign of a trouble in the load versus strain plot in which the initial portion of the curve is not straight, that the thing need to be taken care. These are the experience work, and this may indicate off-center loading of the specimen, and that is how you can exactly examine that is the particular thing is need to be taken care. And what is the problem is that the improper installation of the extensometer or the specimen was not straight to be with, and that is how the particular curve after that that particular curve is started showing in that particular angle if it is not particularly straight. So from that, if we start from that particular and an inclined section, that we exactly identify that there is some problem in the loading of that particular specimen in the particular machine. So what we do, we need to stop that thing and to settle that particular thing. So another potential problem, the trouble sign is a sharp drop is indicated load during the test. Such a drop may be characteristic of the material, but it also indicate problems such as slippage between the specimen and the grip of a stick movement. So initial phase पे दो ही तीन प्रॉब्लम्स हैं, ये कि मतलब भाई अगर ग्रिपिंग सही नहीं होगी तो मटेरियल जो है सही तरीके से अपने इलांगेशन को बेटर नहीं कर पाएगा. सो दिस थिंग नीड टू बी टेकन केयर, और इसकी वजह से जो स्लिपेज होगी वो बहुत ज़्यादा कॉज करेगी. सो स्टिक स्लिप एक्शन इन वेज ग्रिप is more common in testing of the resilient material, but it also can occur in testing of the metal. So a specimen cut from the wall of a pipe or the tube may have curved tab in the testing of the metal. So a specimen cut from the wall of a pipe or tube may have curved tab ends the flatten with increasing force, allowing the insert to move relatively to the grip body. So short tab end on round shaped specimen also may crust by the wedges grip with the same result. And if the sliding faces are not lubricated, they may be moved to unpredictable step accompanied by drop in load reading, dry film, molybdenum, different side lubricant are effective in solving a slip problem in the wedges grip, and the particular when testing is done at elevated temperature. So the later proceeding of that particular test we will discuss in the next class. Thank you.